HCL, TCS and Infosys, इन तीनों का एम्प्लॉय हेडकाउंट इस साल 16,000 एम्प्लॉइज कम हुआ है. In fact, Microsoft, Infosys and TCS have publicly announced they are not going to any of the campuses for bulk hiring. Each of these companies individually have laid off massive number of people, and Google has laid off 15,000 people last year. Byju's is definitely laying off people like left, right, center. So many other companies are laying off people. So there is a time, and an alarming time for a lot of IT students, IT aspirants and IT workers today. So what is the way to look at this situation? Why is this happening and what are the solutions? Let's talk about each of these in detail. Let's start understanding what is going on. So if you look at the current world scenario, India is primarily a service dominated economy where we do a lot of outsourcing. Our entire Bangalore and Hyderabad and Pune and Gurgaon, all of them are classically IT tech service outsourcing centers, and all of these places hire people from for international organizations. Now when the world economy is declining and it's not growing as fast as we expected, a Russia-Ukraine war, or a disruption in the UK economy, or a decline in the US economy is definitely impacting India, because India is servicing all these countries. So with this, there is a decline in the jobs. There are again our internal problems of this startup bubble which is now busting out, and a lot of funding is getting exhausted, and we are going through a funding winter. फंडिंग विंटर इज जब स्टार्टअप्स को पैसा मिलना थोड़ा बंद हो जाता है और मुश्किल होने लगता है. सो देन देयर आर दीस लॉट ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर नाउ फेसिंग अ फंडिंग विंटर, एंड जहां पर उनको फंडिंग और एडिशनल नहीं मिल रही है, और जब एडिशनल फंडिंग नहीं मिलती है तो देन दे स्टार्ट लेइंग ऑफ पीपल. सो वी आर फेसिंग दैट साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल. उसके अलावा देयर आर वर्ल्ड टेंशंस, इकोनॉमिक प्रेशर्स, ऑयल प्राइसेस, ये सब चीजें हैं जो थोड़ी बहुत हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को इंपैक्ट करे. बट प्राइमरी रीजन इज कि हमारा सर्विस सेक्टर अब उन सारी आउटसोर्सिंग कंपनीज को सर्विस करने में डिफिकल्टी देख रहा है. एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस नाउ, एंड हाउ कैन यू रियली थिंक ऑफ, is it something that you should be scared of? There is one more thing that I hear from a lot of people, which is artificial intelligence. Now standard regular coding job, अगर आप ये सोचते हो कि आप केवल एक IT की कोडिंग जॉब कर लोगे, कोडिंग सीख लोगे, आपका काम हो जाएगा, तो life is going to change, because AI is going to change the dimensions of the work. And lot of standard coding will now be available through AI. तो वो सारी jobs भी अब lay off हो रही है. बट इसका सोल्यूशन है, और आई थिंक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिचुएशन खराब है. एक तरफ तुम बोल रहे हैं इंडिया इज बिकमिंग वेरी बिग, इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, एंड वी आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 7-8 years. सो हम ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये होगा कैसे? एक तरफ बोल रहे हैं जॉब लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं इंडिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इकोनॉमी. हाउ इज दैट हैपनिंग? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर के अंदर इट इज गोइंग टू बिकम सुपर स्पेशलाइजेशन वर्ल्ड, एंड वी हैव टू लुक एट मल्टी डिसिप्लिनरी. सो अभी तक जो आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज देखकर आए हो, सुनते हुए आए हो, पढ़ाई के हिसाब से, करियर के हिसाब से, आई थिंक वो जो लाइंस है वो ब्लर होने वाली है, और जब तक वो ब्लर नहीं होगी तब तक हमारा फ्यूचर ही नहीं देख सकते. प्लीज स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. जब भी आप स्टार्टअप्स को देखते हो, दैट्स द बेस्ट आइडिया दैट आई कैन थिंक अबाउट. हम जब भी कोई स्टार्टअप को देखते हैं, हम बोलते हैं एड टेक, fintech, health tech, everything is ending in tech, but there is a domain. So the solution, in my opinion, is that हम लोग को सोचना चाहिए कि यार, can we actually have some multidisciplinary education? Let's take an example of a health expert, somebody who's a medical student, somebody who's a medical expert. अगर आप अपने medical field में भी wow करना चाहते हो, you should learn how to actually use good technology. And you would need to use a lot of machinery. You would need to understand how technology functions, what are those various apps that can be used, what are the various programs that can be used, and start merging the two. So आप health और tech को combine करिए. अगर आप एक technology के student हो, similarly understand health. So you will have to understand how medicines function, what is the basic medicine domain knowledge, and then you should end up becoming a health tech expert. Similarly, you can be a fintech expert. You are a commerce student, understand finance around this. Or on the other hand, if you are a tech student, understand finance, understand commerce, understand and do courses around these things so that you can become a fintech expert. So this combination and marriage is the future. So if you are looking for a great future, start combining these two, become an expert, and I'm promising you,
that is exactly how the world is going to go. So don't be scared कि ये job loss हो रहा है तो economy खराब होने वाली है, situations खराब है. It's just about changing from a science, commerce, humanities kind of a world to fintech, edtech, food tech, health tech, this kind of a world, and just become super experts. Let's hope for a better future, and I wish India and all our students all the best.